हेलो। मोस्ट प्रोबेबली ये जो ट्रेड है यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में। आप लोग इसके जो ट्रेड इंजन का आउटपुट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा। आप इसको पढ़ो। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन डाउन, प्राइस हैज़ लॉस्ट 62,952। तो आप ये जो लेवल देख रहे हो ये ब्रेक हो चुका है। And now it fails if price closes back above 62,952। तो प्राइस अभी इसके 952 के ऊपर आसपास नहीं जा रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी फॉल ओवर 62,475। इट मीन्स 475 ऑलमोस्ट यहाँ जहाँ आप कर्सर देख रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली हमारे ट्रेड इंजन का कहना है कि अगर प्राइस जिस लेवल पे अभी है जिसको ब्रेक कर चुका है 62,952 को अगर रिक्लेम नहीं करता और जिस हिसाब से फेयर वैल्यू गैप कैंडल्स बन रही है 15 मिनट के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारा ट्रेड वो 62,300 62,400 नॉट 300 इसके आसपास जा सकता है। बट ये ट्रेड सेफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ आप एसएल कहाँ लोगे, इसलिए हमारे ट्रेड इंजन ने अभी इसके लिए ट्रेड सेटअप नहीं दिया है। क्योंकि लास्ट ये जो ब्रेक हुआ था यहीं से हुआ था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर हम चेक करेंगे इसको, सो यू कैन लुक एट इट हियर। वेट, लुक एट इट हियर। ये जो सपोर्ट था लास्ट टाइम, प्राइस स्टिल यहाँ पे है। और प्राइस कैसे इसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर से ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट बाउंस जो कि रिजेक्शन शार्प होना चाहिए, यहाँ से शार्प रिजेक्शन नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ एक्युमुलेट करके ये प्राइस ब्रेक करेगा एंड इट विल ओपन द वे। लेट मी जस्ट मार्क इट। इट विल ओपन द वे टू 62,500 और 62,400। दैट्स व्हाट आर ट्रेड स्क्वायर सेज। अब आप लोगों का मानना क्या है, क्या स्ट्रीम में आप देखना चाहते हो, क्या कॉइन एनालाइज करना चाहते हो, जस्ट मेंशन इन कमेंट। इवन मैं जो भी ट्रेड्स पोस्ट करता हूँ अपने टेलीग्राम पे, मैं उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों को कोई ट्रेड वेरीफाई करना हो या कोई ट्रेड एंटर करना हो, सो आप डायरेक्टली हमारे लिंक से कर सके। इवन अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग में, आप फ्रीली टोटली ज्वाइन कर सकते हो हमारे ट्रेड स्क्वायर बॉट को। आप चेक कर सकते हो हमारे ट्रेड स्क्वायर आउटपुट को, लाइक हाउ इट्स परफॉर्मिंग ऑन मार्केट कंडीशन। एंड यू कैन आल्सो चेक द ट्रेड एनालिसिस फीचर, how it will work, the way that I just generated this output. You can see here the technical analysis। इस टेक्निकल एनालिसिस में हमने जितने भी पेयर हैं लाइक बीटीसी, गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स, आप कुछ भी एनालाइज कर सकते हो। और मल्टीपल टाइम फ्रेम से, स्कैल्पिंग से लेकर के जितने बड़े टाइम फ्रेम हैं आपके, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ लेट मी जस्ट शो यू, वेट, जैसे कि अभी मैं इसमें 15 मिनट का डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम से कर रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम सभी जानते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एज़ कम्पेयर टू जितने छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उसमें चांसेस होते हैं हमारे एसएल हिट होने के, बट इसमें नहीं। अब आप चेक करो, ये जो एनालिसिस मैंने जनरेट की है,
ना जैसा कि अभी हम ये आउटपुट चेक कर रहे थे हमारे यूरो यूएसडी पेयर का, उसका चार्ट भी ओपन करते हैं। वेट, हमारा यूरो यूएसडी में कल ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था। वेट, मैं उसका चार्ट खोलता हूँ, शायद इससे हमारी कुछ हेल्प हो जाए। ओके, यूरो यूएसडी, ये रहा यूरो यूएसडी का आपका 30 मिनट, इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यूरो यूएसडी में एनालिसिस का क्या कहना है। करंट प्राइस ये आपका इतना है 1.5508 ना। सेशन आप जान रहे हो एशिया चल रहा है। रेंज जो है वो हमारा 1.15514 एंड द लोवेस्ट वाज 1.153। दैट्स फॉर टुडे द लंडन सेशन। ओके, नाउ yesterday it was low. Today moved 28.9 pips so far. That is total 55% of what it normally moves. That means it's bullish. You can see the trend here in 1 hour. It's totally bullish. Now you can also check it at the price deep premium conviction moderated stretch 2x ATR. 15 मिनट में बेरिश, 15 मिनट में बेरिश कैसे हो सकता है। वेट, हाँ ओके, हाँ ये ऑलमोस्ट अपने एक रेजिस्टेंस के पास है। सो वी कैन से 15 मिनट में बेरिश है, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बन रहा है और इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करके शॉर्ट हो सकता है। बाकी देखते हैं। ऑलराइट, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था हमारा आरएसआई बिल्डिंग एटीआर पिप्स। ग्रेट। ना वर्डिक्ट क्या है, वर्डिक्ट मिक्स्ड है। 1 घंटे का चार्ट हमारा बुलिश बता रहा है और वहीं छोटे टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, रिजेक्शन कैंडल है, इवन ये रेजिस्टेंस है। सो वो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से शॉर्ट है, इसलिए ओपिनियन जो है हमारा वर्डिक्ट जो है मिक्स्ड आ रहा है। इसके बाद वाइल द एंट्री चार्ट यू कैन सी, आप लोग सभी जानते होंगे जो भी ट्रेड करते हैं कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को चार्ट देखने के लिए यूज़ करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम को एंट्री लेने के लिए। सो दैट्स व्हाट आवर वर्डिक्ट इज सेइंग, दैट 1 hour chart is bullish while the enter chart is bearish. It means कि 1 घंटे में हमारा चार्ट जो है बुलिश है और 15 मिनट में बेयरिश है। इट इज़ सिंपल। सो ओपिनियन मिक्स है। सो अभी इसमें ट्रेड करना कब पॉसिबल है हम आगे देखते हैं। इसके आगे वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, लिक्विडिटी हो गया, अब वाला decision zone. Now look at it here. It's 1.15523 to 1.15535. Price is below. Now let me just read this. Built for shelf where a lot of trading happens. Okay, price capped under the decision zone. It acts as resistance. That's what happening here. You can look at it. Here is our resistance and it's nearby that. Now here is the actual number. If you want to just check it at the actual resistance range, so here is the number, you can read it. Now also our support is 1.15128, that is 1.1528, that is almost here. सो इसके बॉटम पे है जो कि नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है सो मोस्ट प्रोबेबली वो शॉर्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ तक कि TP1 के लिए 1:2। बट आप SL क्या रखते हैं, आप SL रखते हैं इस वीक के ऊपर जो कि है आपका 1.15635। हाँ तो ये एक्चुअल सेफ है बट नॉट दैट मच। हमारे ट्रेड स्क्वायर के हिसाब से अभी मिक्स्ड ओपिनियन है जो कि बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम मैच नहीं करते। इसके अलावा हम पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। Sellers are in control and price is capped under this zone against its time frame disagree. Okay, as we discussed. Now wait, if price breaks up, wait for 15-minute candles to reclaim 1.15523. It means this number 1.15523.
नो इट्स अनेबल टू रिक्लेम, ये उससे पहले रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद दैट्स ओपन अ वे टू 1.1578, सो इट्स नॉट हैज़ ओपन येट, it has not break this candle and it has not reclaimed it yet, so we can just wait it so far. Now the second one, the downside, it's already broken. It has broken those numbers, the 1.5523 in euro USD, 1.5523, it has been broken. So now that opens a way to 1.151, 1.151, that is almost here. 1.166, that is way bottom. Now, if you have any questions or you wanted to analyze your pair, like this was Forex, this was Euro USD chart. Now, if you are looking to check this TradeSquare engine for analyzing any pair, like any crypto pair, if you want to just analyze gold, or if you just want to check it, so you can just comment it and I'll help you up to explain it very sharply according to your language, whatever it suits you. So I'm here. Just drop your questions in our comment box and I'll be happy to answer you. Also, the results you are looking at here, this is our last week result, and yesterday, from last night, this boat was open, the engine was working, and so far it has made a $28 for almost a $5, then a loss of a $49.24, and there is a recent position that I just have closed it by manually, that is almost $62. Let me just show it to you what happened after it. Here I was exited at this point of time and it went up to its target almost, and now it's coming up down. So let me check our TP as well. It was 112.657, 112.65, sorry, 657. So our TP was 2 up, it was almost here and it rejected before that. That's why we just exited.
Welcome to the stream users. Please like the live stream, and if you have any questions, please drop it in our comment box. I'll be happy to answer you all. Whatever the questions you have, either it's your pair or the strategy. If you are a beginner or an expert advice holder or anyone who wanted to give any suggestions, I really appreciate it if you comment or just hit a like button, so it will push our live stream for getting to the right viewers. So please do like as well. एंड हमारी जर्नी को फॉलो करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें. हमारे जितने भी ट्रेड हैं ये सारे ऑटो एग्जीक्यूटेड हैं. इट मीन्स we don't have to search trades manually. This trade engine, the one you are looking at the left hand side, this is our TradeSquire engine, and it do analyzes the chart by itself. It also find the best possible trade setups, and sometimes you get the confluence as well, like either it's better to take this trade. Also you can check the breakdown, like analyze it, look at it in the left hand side. I just analyzed the pair called euro usd. If you trade forex, you know about it. Otherwise you can trade any pair, like just these three: forex, crypto and gold. That's what we are live on. If you want to test it by yourself, just come and trial, and we'll help you up to assign this bot to your telegram, and we'll set it up for you. At the bottom, the PNL you are looking at, it's today's PNL. Whatever the trade it has taken by itself, it has managed. Apart from this last one, because I manually closed it, that's what you can see the notification here. But rest of the part, the trade, the one you can see the $28, the $5, and the rest 49 minus as well. So this all is auto generated, auto analyzed, and auto executed by this trade engine. I want you guys to test it free of cost by yourself and just give me feedback. If it's working best on your telegram, your setup, whatever the setup you deal with, or you can also analyze like this. Look at it here. You will get the session timings, the day, and whatever the its high price, and what's the move percentage here. Even the overall trend, the higher time frame trend, either the trade time like scalping, you'll get the EMA as well as the breakdown. Even look at it here, the verdict. So it will help you a lot if you spend hours to analyze chart, just to check breakout structure, just to find normal support resistance, any fair value gap, what are the market condition, even the fundamental news. I mean the fundamental analysis. So you can do all just by this TradeSquare engine. For right now, it's free of cost. You can use it, you can check it, you can analyze it technically, fundamentally. You can look at it here, the picture, the one that you see in the left hand side. I want you to join my telegram as well. You can see all of these trades I have posted over there. So you can open this picture by yourself and you can find the key zone, the support, resistance, and fair value gap, whatever it's marked. So it will give you a clear picture without spending hours, like first going into the bigger time frame like 4 hours, 1 day, and then it will look into the scalping time zone, the trade time zone as well. So it will help you to reduce your charting time, whatever the time you spend, keep on finding trends. So I think it can probably help you to short this time. Also, what you can get this notification turn on. You can simply turn on this notification by just clicking few options here, and whenever the setup you are putting it, whenever it reaches your price, like you are using what it's called
the EMA. Let's suppose if it reaches to this level, you will get notification upfront. You'll get it on your Telegram that yes, your setup got hit, you want to execute it or not. If you just set it up manually, you can just go ahead and put the numbers and get enter on that trade. But on that way, you have to manage it by yourself. What I just did, I just what you can see here, this is my algo account. This is my prop form account where I have put this algo. I have merged this algo for an auto execution. So whatever the trade here you see, it's auto executed, auto analyzed, and auto managed as well. एंड जिस भी मेरे भाई को इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ. सो यू कैन जस्ट कमेंट इट. अगर आप जानना चाहते हो क्या है ट्रेड स्क्वायर, मैं यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपके चार्ट दिख रहा है, जो टेलीग्राम का ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है, मैं इस चीज़ को आपको बेटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप इसके लिए मेरी लास्ट वीडियोस भी जाके देखें. जितने भी हैं हम डे मोस्ट ऑफ द टाइम वीकली 5 डेज लाइव करते हैं. जितने भी ट्रेड सॉफ्टवेयर चलता है आप इन सभी लाइव स्ट्रीम्स को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो. क्या प्रॉफिट रहा, किस तरीके से काम करता है, कैसे एनालाइज करता है, कैसे एग्जीक्यूशन वर्क करता है. सो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर. आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगा आपके डिसीजंस बनाने में. इवन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड करते हो, आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो, कुछ भी आप इसको ट्राई करो, आप चेक करो. And if it works for you, that is totally worth it.
Guys, do like this live stream as you are watching it. Whatever the questions you have, you can drop it in the comment box. Also, if any questions or any feedback, you all are welcome to drop it in comment. The PNL you are looking at the bottom, it's today's PNL, and on the left hand side you are looking at, that's our TradeSquire engine, which helps you to just find the best high probability trade setups. Like you can analyze any pair including crypto, forex, and go. You can find whatever the time frame you have. Look at it here. I'm just showing it to you. How does it works? In just order to analyze any pair, you have to just give this command / analyze, and you'll get the options here like technical analysis, fundamental analysis, and smart insight. What is technical analysis? As we all know that this is based on structure, support, resistance, whatever the technicals you have learned in the trading, that is called technical, and the news related to that pair or the fundamental context. If you trade maximum pairs or for a long time, you know what a fundamental technical analysis is. So for right now, I'm selecting here the technical analysis. Now I can select any pair. Look at it here. If it's BTC, gold, US oil, Euro USD, USDJPY, or Ethereum, I can select any of these. Or if there anything apart from it, like any forex pair or any other crypto pair, we can just type it here, the name called link USDT. That's all I just have to do. Now it will give me the option, either I want to scalp or I want to find an intraday trade or a swing trade. So we can just simply select um, swing trade, which is mostly around 30 minutes. Now what it's going to do, according to each and everything you are looking at here, it's called market structure, trends, break map, and every evaluation here. Now within just few seconds, I got every report about this pair called Link USDT, and it's for the 30-minute analysis. And under that, you can see the yesterday how it went, how it performed, and how much it moved. Now, just under that, we can see trends. The trends shows the high time frame, that is called 4 hour. It's called bullish. Now in 30 minutes, it's also bullish. So it means both are matching. Now no structure break recently, even the 200 EMA, it's matching. Let me first of all open this chart so I can match it. Perfect. Let me open this chart for you as well. Look at now. This is the trade that we took yesterday, and it was also by our TradeSquire analysis, and it hit very well. At the first time, it missed our entry, but at the second time, we used this fair value gap to enter in trade, and that's where it performed it well. Now, if we are talking about today's analysis, look at it here. As it's saying that it's bullish in 4 hour time frame and 30 minutes time frame. You can see the structure here. It's already bullish. Now, if you look 200 EMA, it's already rising upon 8.65. So that is totally accurate. Now, just under that, you can see here the verdict, what it says. It says it's bullish. Both the time frame we selected, the 30-minute, it was bullish, and also the 4 hour time frame was bullish. And that's where it says both time frame agree and nothing is stretched. Now, if we look liquidity here, where the spots are, it's above 8.90.
Look at it here, 8.90. It's almost here to the upside. Now below we can see it's 8.68. It's almost here, 8.68. It's almost here. So both the places, either at the upside or the downside, we have our liquidity here. Now, if we look volume, you can go ahead and you can read this article by yourself. What does the volume says and what's the imbalances says. Now, if we come here, the what could be the probable way if it's break these levels towards upside and towards breakdown. So look at it here. It says price has cleared 8.82 and holding above it. Is it? Yes, it has been cleared, and even there is a good fair value gap you can see on 15 minutes time frame. And just under that, it says that opens a way to 8.87. Let me look at it. 8.87. It's almost here. It's, it's almost here. Now, if we look at it at the downside, that is 8.72 here. Now, both are the decisions making. Like if it breaks above it, it will go up. If it breaks 8.82, it can go, sorry, 8.8, 8.72, it will go down. That's what it says. Not definitely, but that's the probable way to losing it. Now, if we can just click on this view chart thing, we'll get a chart. I can share it to you on my analysis channel because it's not that big visible to you. But look at it here. It's showing us the key zone where it's stuck between. Also, it's giving a fair value gap at the bottom, and there is another one. So either it's good to taking a trade about this EMA. Now, yes, we will have to wait for entry in it.